हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 29 जून और आज का व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज हम लोग ट्रायम्फ का त्रिशूल को टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। त्रिशूल नहीं समझे, ट्रायम्फ का ट्राइडेंट 660 हम लोग आज लेने के लिए जा रहे हैं। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में फिलहाल चल रहा है लॉकडाउन, तो 4 बजे जो है हमारे यहाँ पे सारे शॉप सारे शोरूम्स बंद हो जाते हैं। ये मेरा दोस्त जो है ये आ चुका है, इसकी वजह से सारा लेट हुआ है। देखते हैं वहाँ जाते हैं और जितना भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के बाद में देखते हैं टेस्ट ड्राइव लेके कैसा लगता है। भाई साहब, लेट मी इन। व्हाट्स अप? ऑल गुड ऑल गुड। तो फाइनली बैठ चुके कार में और 20 मिनट 15 मिनट लगेगा आई गेस ऑलमोस्ट, और उसके बाद में मिलते हैं फिर सीधा ट्रायम्फ के शोरूम पे। सो फाइनली इट इज़ इन आवर हैंड्स और कुछ ऐसी दिख रही है फ़िलहाल। ये यहाँ पर इसका किल स्विच और इग्निशन है, यहाँ पर हज़ार्ड स्विच है, यहाँ पर मोड्स के लिए बटन है। सो करंटली इट इज़ इन रोड मोड, वी कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर अगर आप देखोगे रेन रोड, ओके, सो इट हैज़ 2 मोड्स, रेन एंड रोड। सो विल गो विथ द रोड मोड इटसेल्फ। Okay, so let's fire it up. First thing I noticed that it doesn't build up the rev directly. It takes its time, if you can see. Okay, so let's go. Handling is pretty sharp. Okay, so as you guys know that I have a 650 Ninja and you will see a lot of comparison between these two machines. First thing right off the bat, thank you. फर्स्ट थिंग राइट ऑफ द बैट के मेरे को जो अपना इंजन हीट है वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। ओके ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ टॉर्क, मोर देन माय निंजा 650. इंजन इज स्मूथ. आई एम फीलिंग अ लिटिल वाइब्रेशन ऑन हैंडल बार्स, नो वाइब्रेशन ऑन सीट्स और फुट पेग्स. That whistle. Let's try it in some traffic. Lot of wind blast, lot of wind blast. $130 and you'll feel a lot of wind coming from front. Being a naked bike, you'll feel this. And if you put up the visor or anything, that will ruin the look of it, and yeah, that would just not be worth it. Braking power is good. Braking, you can drop the anchor very quickly. Gear shifting up and down both are very smooth. So that's how it looks.
ट्रैफिक में सब लोग सोच रहे होंगे ये पागल बंदा कर क्या रहा है। Building up the speed on this machine is very easy, and dropping the anchors too, thanks to the braking power from Triumph. Man, this machine is mad, and it is flickable. एक बार उसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो। I couldn't keep my head up. Let me close the visor. I couldn't keep my head up. Wind blast is so bad on this one. You'll have to be full tuck if you want to do high speeds on this one. You'll have to be completely tucked. And I was not doing some crazy amount of speeds. I was around 130ish, I guess. But dude, the wind blast on this machine is bad. You'll not be able to do 150 and above. Gears are smooth. I must say gears are so smooth in comparison with my Ninja 650. Suspension is good, not too soft, not too stiff. Small bumps will be gone. The only thing you will feel will be the bigger bumps, and the handling is very good because of that stiffer suspension. Do we have a quick shifter on this one? Nope, no quick shifter. Other than the throttle, everything is very, very nice on this machine. Sorry, two things. Other than the throttle response and being a naked bike, the wind blast you get on this one is very bad. Apart from those 2 points, this is the sweet machine. Triumph Trident is winning my heart. Cops! 145, and I was getting pulled like crazy because of the winds coming from front of this machine. Woo-hoo. I like how this thing downshifts, because if you downshift on a Ninja, you will get a jerk for sure. This one stays smooth. It is so flickable. I'll stop here for a second to take a good look on this machine. Hazard light off, and here we go. I hope you guys can hear it. So that was the ride of it. अभी गाड़ी करते हैं वापस शोरूम के हवाले, और फिर मैं आपको बाकी की कहानी आगे सुनाता हूँ. आप लोगों ने मेरा रिव्यू तो सुन लिया कि मेरे को क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया. रचित राइट हियर, he owns a 650 as well. आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, जो
Yes, I'm the one dancing in that video. यस Yeah, सो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो करो, ये बंदे का डांस देखने मिलेगा वहाँ पे इफ यू आर इंटरेस्टेड. ही डांस वेरी गुड, जाके देखो और वहाँ पे कमेंट करके बताओ कितना अच्छा था कितना बुरा था. बट ही ओन्स अ 650 एज वेल, सेम एज माइन. व्हाट वर यू सेइंग अबाउट द सस्पेंशन सेटअप? So first let's talk about the pros. Pros first and foremost, I think it is about 10% more comfortable to ride. If I compare it back to back on the Palm Beach road, I did not get a chance to take it on uneven roads. So when I compare it with the Ninja 650, I think it is about 10% more comfortable because of the suspension setup. Secondly, I think the seat was more comfortable because of the padding. Yes, I felt it. And yeah, so thirdly, I felt it has a much more throatier exhaust note. Correct. So that is a good thing. Yeah. Then if you see the acceleration, I think the difference between the twin cylinder and 3-cylinder can be felt Yes. in the initial surge. Yes. So initial surge, no doubt Ninja 650 is good, but it is not, you can't take it all the way to the red line. Correct. And So, this thing yeah, keeps so- pulling. Yeah, so this thing keeps pulling. The mid-range is quite a big range. Yes. So yeah, so that's a big plus point here. To conclude this, did you like Triumph Trident 660? Okay, would you be liking to trade if you get a chance to? No. Ninja 650, the looks, the overall package, the way it makes the heads turn yeah. at each and every junction, everywhere you go. That big bike feel, if you need, I agree. I think that Trident 650 is not the one for you. Like, Yes, should and go if you park Ninja 650 anywhere now, it will grab attention of people. Yes. And so- if you park Trident 660, it might not be like as much eye grabbing because Yes, it looks yes. like any other So, bike. overall, if you see looks and all and everything, I think Ninja 650 being a lakh cheaper, I think it still makes more sense to me. तो ये थे हमारे संवाददाता पंप का रजित अरोड़ा के साथ शमन ट्रायम्फ वाशी यूट्यूब इंडिया के लिए.